Ruhi has a little dry skin. Oh, This isn't your regular beauty show. This is So You Think You Can Blend, this That's is how you heaven. do it. where flawless glam meets full-blown chaos. Each episode, a top makeup artist thinks they are here to take you through a trending makeup look. But we have a surprise in store. Because I sweat usually. Prank them at every step of the way. Will the makeup artist make it to the end? Let's find out. Hi guys, this is Mansi and you're watching me on Nykaa's YouTube channel. Today, Me also they are watching, no? yes, Yeah. you're gonna come into the frame. Oh, okay. So, anybody who has no idea of what and how you do your makeup, please watch this video. As I can see, Ruhi has a little dry skin. Oh, Little dry. okay. She's starting only with like. Plan is to make sure that she cries. But I've heard that she's really sweet, so it's going to be very difficult for me to like be rude. So particularly इस तरह की स्किन के लिए हम लोग फेशियल मिस्ट यूज़ करते हैं. फेशियल मिस्ट बेसिकली आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेगा बिकॉज इट्स समर टाइम यू वांट लाइक ए कूलिंग सेंसेशन ऑन योर फेस. सो आर वी गोइंग टू पुट द ग्लासेस? Yeah. Yes. Yeah, glasses will be on throughout mostly. Okay. Even if you don't have a mist, there's no need to worry. The tip here would be you just need 2 spoons. Okay, this I'm sure you all will have. You dip it in the fridge or maybe dip it in the ice cold water. Yeah, that's how you do it. And then we are gonna place it on her face. So this is gonna calm her, relax her, and it's going to tighten her skin. Okay, because that's what we need. Do you feel the coolness? Yeah, this is like the face yoga I do Yeah, every time. see? Yeah, See? wow. It actually reduces inflammation, and if you have puffy eyes, you can use it for the puffy eyes also. So the next step would be a moisturizer. I would never skip a moisturizer. It's a belief that people who has oily skin can skip moisturizer. You just have to work on the quantity, guys. You just have to take a pea size if you feel that you sweat with the moisturizer. Maybe you're not using the right moisturizer, to be honest. We're gonna use a moisturizer here. Okay, so this is how you do. You can just rub on your palm and then you can simply either dab it or you can work on the sections also. Yeah. Okay. You need extra moisturizer for my forehead. Are you laughing? Now you have to give it like a good 30 seconds for any of your product to settle down in your base, because if you hurry, I'm sure your makeup base will gonna come out very soon. You said 30 seconds? 30 seconds is good. Let's try this. Okay, it started. 30 seconds. Not exactly with the timer. Yeah. Very punctual. I'll also walk around a little bit. So I'm going to be doing everything in my power to be weird as fuck. Just get me water and that shaker, no? Yeah. Please? Give me like 5 minutes. उसके पहले थोड़ा हमला तो वियर्ड है ऑनेस्टली. ऐसा नहीं है कि मुझे सबूत किया बट इससे तो कुछ नहीं है, हो जाएगा. बट अगर उसको बोले थोड़ा बर्प करे. little मेहनत. Or something. Yeah, ना? It will not fall out, right? नहीं. Hopefully. Imagine. It should be good. Yeah, check. No, I'm good, I'm full. ज़्यादा पानी डाल दिया. Yeah, wanna rate my I'll be burp? used to. You wanna rate my burp? कैसा था वो? I'll have to intervene for 1 minute. Really, the Nykaa team really needs you to remove our sunglasses. Glasses? Yeah. That's not right. You know I told them कि no, without glasses like I won't do it. Where's Ahan? Can you speak to him about this? Yeah, we just had a call. Like y'all didn't pay me for this and take I it, feel like whatever she it would is. be much more comfortable if this. ठीक है, now it's fine. We'll talk about this after. To be honest, sunglasses are for me to not laugh. So now the steps are going to be completely reversed. This is called reverse painting, where we're going to use blusher पहले, फिर हम contour use करेंगे, फिर हम concealer use करेंगे, and then we're going to move to the base, यानी कि आपका foundation. Okay, I'm just going to melt my product थोड़ा सा.
एंड दिस विल एक्चुअली एक्टिवेट द प्रोडक्ट और थोड़ा अच्छा पिगमेंट आता है इससे कि अगर आपका स्किन टोन वार्म है देन यू गो विद चेरी रेड्स और ब्राउन्स. अगर आपका स्किन टोन कूल कलर का है, थोड़ा फेयर में जा रहा है, तो आप पिंक्स, पीचेस, इस तरह के कोरल कलर्स बहुत अच्छे से आपको सूट करेगा. बट अगेन इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस, आपको ऐसे किसी भी रूल में नहीं बाउंड होना है. ये नायका इसलिए इतना पिंक ब्लश लग रहा है मेरे मुंह पे. अब हम यूज़ करेंगे कंसीलर लुका. वन सेकंड. इट्स ओके. ओके. अब जो कंसीलर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम लोग को सबको फेस करने को मिलता है दैट इज क्रीजिंग ऑफ योर अंडर आइज. तो क्रीजिंग करने में प्रॉब्लम ये है कि वो किसी को भी हो सकता है. देयर इज नो रेमेडी अनलेस यू आर गोइंग फॉर सम मेडिकल ट्रीटमेंट. बोटॉक्स. या रूही, कैन यू ओपन योर आइज प्लीज? आइज ओपन रूही. या आइज ओपन. नाउ यू 1 second, एक सेकेंड. नाउ रूही, कैन यू स्क्विंट योर आइज ऐसे? Just do, yeah, keep it there, keep it there. Yeah, that much is good. That's it. Done? That's it. Oof. Look up. No, if you move, I might. Okay. Oh, will go down. ये ठीक है? हाँ. So ऐसे मैंने सारा प्रोडक्ट अंडर आई से हटा दिया है. And then you can use your blender. Now you can look normal. Straight. Light motions, don't drag your product. थोड़ा सा blend के वे में करना है आपको, बहुत हल्के हल्के हाथ से. Look up. नहीं, up as in look normal, straight. Yes. Up? Then look up means your eyes up. Oh. Yeah. और अब ब्राउज बहुत ही नेचुरल रखेंगे. ब्राउज में हम कुछ नहीं यूज़ करेंगे. यू कैन सिंपली यूज़ लाइक अ टिंटेड जेल और क्लियर जेल जस्ट टू शेप योर आईब्रोज. लुक हियर. फाउंडेशन थोड़ा सा आपके स्किन को हैवी कर देगा, राइट? इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए फाउंडेशन व्हाट यू कैन डू इज आप थोड़ा कोई भी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम या फाउंडेशन टिंट यूज़ कर सकते हो. ओके, सो वी गोना यूज़ अ टिंट. बट आई बिलीव कि टिंट या बीबी सीसी क्रीम सबके पास नहीं होगा और फाउंडेशन आप सबके पास डेफिनेटली होगा. Tint तो देयर इज अ टिप फॉर यू. आप अपना कोई भी फाउंडेशन ले लो. ओके, थोड़ा सा फाउंडेशन लिया and then you mix it with any of your moisturizer. And this works as good as your skin tint. Okay, क्योंकि हाइड्रेशन ही तो चाहिए. मॉइस्चराइज़र में हाइड्रेशन होता है. प्रोडक्ट का फाउंडेशन का जो आपको कलर है वो उसमें फाउंडेशन से मिल जाएगा. एंड यूर रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ द फाउंडेशन ऑल्सो. हम बहुत हल्का हल्का करेंगे because we want the skin texture to show, we want the skin to peek through. So gently I'm gonna dab it. Favorite part. Yes. Our next step will be eyeshadows. Eyeshadow सबके पास होगा. नहीं है तो there is again a tip we have. कोई भी अपना bullet lipstick लो which is hydrated. आप कोई भी कलर ले सकते हो whichever you prefer. ठीक है, मैं हल्का सा इसको ले रही हूँ because I want like a very monochromatic, very subtle look. तो मैं हल्का सा, it looks red, right? It is red color. Yeah, dark red. But वो बहुत अच्छे से melt हो जाएगा. Eyes closed. Very good. Now if you want to pack this eyeshadow because summer में क्या होगा ना, हमारा प्रोडक्ट थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है. ओके, either you can use a compact or an eyeshadow. So Ruhi, can you look here? Where? Towards me. Yeah, and then you can use any eyeshadow color matching to what you've already used, of course. Now we're moving on to powder packing. अब powder मैंने बोला है कि 2 Break minutes. you? 2 minutes. It's Okay. feeling very Yeah, too yeah. much sitting for me. 2 minutes. Literally 1 minute. I got you. let me know. This is very uncomfortable chair, huh? This used to be comfortable, although थोड़ा yeah. little uncomfortable. I feel like my back is hurting a lot. Stretch करोगे थोड़ा मुझे? एक से पीछे पकड़. क्या करूँ? इसे पीछे पकड़ लो और उसको ऊपर खींचो और थोड़ा क्लोज करो. I feel like I don't know something. I can feel it's stuck. सांस अटकी हुई लग रही है. Can we do it standing by any chance makeup? No. We can't do makeup standing ending part. नहीं.
कितने आवर्स के लिए आपको मेकअप रखना है, तो पैकिंग आपको उसके अकॉर्डिंग करना है, राइट? सो इफ़ यू आर गोना यूज़ फॉर अ गुड इनफ टाइम, आपको बहुत लंबे टाइम तक रखना है, यू कैन यूजुअली बेक इट. बट बेकिंग हम इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू गिव हर वेरी नाइस टेक्सचर्ड स्किन. बहुत ही हल्का रखना है, तो हम बेकिंग बिल्कुल नहीं करेंगे. हम जस्ट गोना यूज़ कॉम्पैक्ट विच इज़ वेरी लाइट. थोड़ा सा जॉ लाइन पे कर देंगे, लुक अप, आइज ओपन, या थोड़ा सा अंडर आइज पे कर देंगे, लुक स्ट्रेट, नो स्ट्रेट, यस. फॉरहेड पे हम लोग कर देंगे बिकॉज यहाँ पे भी स्वेट आता है. टी जोन आपका जो है, यहाँ पे आपको स्वेट आ सकता है, तो हम यहाँ पे भी करेंगे. मस्कारा लगाने के लिए आपका आइज़ बहुत ही इट्स अ वे टू मेक योर आइज़ लुक वाइडर. थोड़ा सा अच्छा ओपन हो जाता है आइज़. यू डोंट लुक स्लीपी इफ़ यू हैव नॉट स्लेप्ट लास्ट नाइट. सो यस, You have smooth hands. लुक डाउन, डाउन नहीं, यू डोंट लुक डाउन, Oh. आइज़ ओनली, जस्ट वर्क विद योर आइज़. तो ये स्क्विंटेड लो, सो नीचे आ गया. You asked me to squint. ओके, अभी यहाँ Quick पे fix? there is a quick fix, again a tip. See, extra good pointers I'm giving for clean you. it right now. आप इसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ दो. ओके, आई विल वेट फॉर इट टू ड्राई एंड देन वी कैन यूज अगेन अ Q-tip. कोई भी कॉटन बड ले लो आप, और उसके On बाद top of that. ऑन टॉप ऑफ दैट यू जस्ट ट्राई टू, लाइक दिस इज द मोशन, लाइक ट्राई टू एक्सट्रैक्ट इट. नया tip को with Q-tip. with Q-tip, right? Okay, let's go. So that's how we achieve our clean makeup look, and you can see how beautiful the lips are looking. बिल्कुल subtle, natural, just like her natural lip color, right? Okay. So highlighter तो आप कहीं भी पूरे face पे use कर सकते हो. There is no specific area, but usually जो हम बोलते हैं that is your forehead, your T-points and your high points of your face. अगर मुझे किसी को थोड़ा youthful दिखाना है, which obviously हम सबको चाहिए, हम सबको youthful ही दिखना है. So what I'll do is I'm just gonna use highlighter on the fleshy part of your cheek. जहाँ आपका पूरा cheeks का fleshy part है, right? This area. Immediately आपको glow नहीं दिखेगा, right? Eyes. So. एक जगह और है जहाँ आप कर सकते हो. उससे मुझे लगता है कि मेरी आइज थोड़ी वाइड लगती है. तो हम इनर कॉर्नर्स में ये जो टीयर डक्ट है, यहाँ पे हम अपना हाइलाइटर यूज़ करते हैं. लेकिन मैं बोलूँगी आप एक बार यहाँ पे भी ट्राई करके देखना, लाइक दिस पार्ट, जहाँ चश्मा बैठता जहाँ चश्मा बैठता है. है. Can I just hold? Let me just hold that. Okay, get the bowl, guys. Get the bowl. Last step would be to lock your One- face. थोड़ा अभी भी it's like very. Doesn't it look like थोड़ा cakey? Does it? You know what I'm gonna do? 1 second. Please, one minute. Please no, please no. Look there, one time, look there. This is how you prank the sweetest and the most cutest. This is whole thing I Really? Oh my god. अच्छा वो भी? Oh my god. और मैं सोच रही यार होता होगा because see honestly this is my first experience to be honest. मुझे लगा I'm so एक बार sorry. खींच देती हूँ. And by the way, मुझे आया क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ. हाँ जी. तो मैंने कहा इसको पता चल जाएगा एक खींचते. I feel like she's so convinced that's me. Like she's still like, is this really her? I don't give a about coffee time, whatnot. Now let's finish it. I don't care about anything. Like nothing is on time. Nobody cares. Thank you so much. Why? And thank you. Huh? Yeah, I don't care. Oh! The glasses. Nobody cares about nothing. Let's do our last step. Now we know the brand. I feel like- makeup is beautiful. Yes. That's it. And we are done. And now you can see how beautiful, youthful, glowy the makeup is looking. Okay, this is what we call a clean makeup base look. Okay. Thank you guys for watching Nykaa TV You can like, share, and subscribe. and stay tuned for the next episode.